तो गाइस यहाँ पे बड़ा would say that मजेदार for मैच India it शुरू हो needs to चुका be है। तो देखें ये मैच consolidation कौन day. जीता कौन नहीं जीत पाता। Which will start आपसे chatting with मुलाकात होगी अभी Mohamed थोड़ी देर तक, आप मैच Siraj एंजॉय करें। and the देखें जरा players, कौन of जीता, course, आप who मुझे spend so कमेंट में much जरूर time बताएं। playing franchise cricket together. Generally play modern Test cricket. It's the approach from the Australians. And what was very impressive about Alex Carey was he's looking at the two ends, the vulture end. Just on this Australian innings, I think it's been the perfect template of how you bat here in Australia. The first 41 overs they got 100. That's a match. He was able to get a little bit of turn and bounce. Pushing hard, excellent running. Just looking, he's pitched outside leg, I think, Richard Carroll. There's some turn. this is where Nathan Oh, that's a nice touch. That's racing across the outfield, and that'll be 4 and 50. Back to back at this. mentioned about the body language of the Indians and the intent in the field. I've seen so many teams that have come to Australia and just show a hint of lethargy in the field, and you take that into your bat. It's a great point. Just going back to Travis Head in that first Test match in the second innings, Australia were gone. Old 11 deliveries this morning, and nothing's been scored off from Bumrah. He does exactly. Of all the Australian players, he played a bit of state stuff, was in fine form for South Australia. Glad you mentioned that, because I think that's the most, and you'll get this physical fatigue. I don't think Stark goes to the leg side with great effect. He will have gone all the way. Yes, indeed. The big boundary out there, but not for. And again, doesn't collect it quite. good point you make there, Gilly, because first when the Quick to the leg side. So it's game on now. There's the intent from the Australians. Oh, nearly chipped back. I reckon if you're trying to get up with the over rate, I think Jadeja's probably the best bowl. Oh, well done, Rishabh. The delivery that, I mean, Bumrah is incredible, but the delivery that I think... There it is. Just change of pace, just... There's a noise, good noise. Has it carried through? Indeed it has. Stark goes. It's 6 now for Bumrah. He's unstoppable. He's so reliable. So the race is on between Bumrah and his colleagues. this game progresses, especially for the faster bowlers. Yeah, I think the start of anyone's innings... Unless Bumrah will bowl from the Stanley Street end. Oh, that's beautifully struck. Powerful. Oh, it's gone well back into the corporate boxes. Class from Carey. That's huge. I reckon if there's ever a time of day where you might catch one in that kind of area, they look like a lively crew. Hey, I know it's on the Big Bash coverage last night that when someone hits a 6, there's a... Wonder if 450 is the magic number for Australia to pull out. और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र, मनी, राजेश। तीसरे दिन का खेल आरंभ हुआ। लग रहा था कि शुरू भारतीय बल्लेबाजों को 2 बार आउट करने के लिए जितना समय चाहिए वो बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत ही जल्दी उनका ओवर समाप्त होता है। धर्मेंद्र, आज भी बुमराह ने विकेट लिया। इस समय आकाशदीप गेंदबाजी कर रहे हैं। इस सत्र में अब तक 8.1 ओवर सब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार पुल किया है गेंद को। हालांकि
मिड विकेट पर फील्ड करना। बॉल की बात करें तो इसमें जो सीम होती है शुरुआत में, उसमें सीम उठी हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे 20 पहला सेशन ही है, मुझे लगता है कि अगर भारत की 2-4 विकेट जल्दी गिर गई कि क्या स्कोर सही रहेगा और कितनी देर खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं खेलेंगे आज। और तो पारी डिक्लेयर करने का जो संकेत संजय आपने पिछले ओवर की अंतिम गेंद से पहले बताया था, उसकी संभावना तो अभी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बारिश की बूंदें जरूर आ गई हैं। 35, Australia will resume. We've just been talking about Steve Smith and his passion for the game of cricket, and that's what we see with the likes of Virat Kohli and those that have that longevity, isn't it? Is they love just turning up every single day because of the intensity and just. And Alex Carey continues. Yeah, but I was expecting a flop. I thought his partnership with Bumrah early in the Australian innings was. Seen that a bit from Alex Carey, and he's not going to take the single. Happy to use the bouncer as well. I actually felt in his opening spell of this inning. Oh, that was nearly the Harmison ball. That was definitely the Harmison ball. That has missed every. I think Harmison's was a little bit shot, and he's off the mark. Nathan Lyon. They're going to come back for a couple. मणि राजेश और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर संजय अग्रवाल। और इस बीच एक जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। बातचीत हो रही है विकेट कीपर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच। और तो भारत का एक और रिव्यू खत्म होता होगा के खिलाफ उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो और आकाशदीप अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए करूंगा, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि कमिंस को लग रहा है कि पहली पारी में ही आप स्कोर के 3 या 4 के औसत से बनते, कम से कम 4 के औसत से, क्योंकि एलेक्स कैरी खेल रहे हैं। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि आज भारतीय गेंदबाज और भारतीय बल्लेबाजी भी इतनी कमजोर नहीं है। अगर एक बार भारतीय बल्लेबाजों ने पैर जमा दिया और रन बनने लगे तो फिर तो इसलिए अपने आप को कम से कम सुरक्षित किया जाए। और देखिए क्या बढ़िया स्ट्रोक, शानदार पुल। पहली गेंद यॉर्कर काफी अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में बिल्कुल लाइन के, लेकिन लाइन ने किसी तरह से अपने विकेटों से दूर बड़े से बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। इस बार ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन बीट हुए और क्लीन बोल्ड। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस मौके पर अंदर आती और अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सिराज की ये आकाशदीप, क्या उनके खाते में कोई विकेट आएगा? पुल किया उनकी पहली गेंद को और हवा में गेंद आउट। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की पारी 445 रन पर सिमट गई है। आकाशदीप को भी आखिरकार संजय एक सफलता मिल ही गई, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। और इस मौके पर कैरी जो उनके सामने बल्लेबाज थे, उनकी कोशिश अब यही थी कि अंतिम साझेदार उनका मैदान पर है तो जल्दी से जल्दी रन बनाया जाए। पटकी हुई गेंद थी, छोटी गेंद थी, उसको पुल किया। Rahul, he's standing down by the boundary edge with his gear on and ready for action. The sun is out now, suddenly very bright. This is the new Australian dance that they rehearse. Come on, everybody, get on with the game. Here come the umpires at last. Words from Pat Cummins that it'll all be about concentration, keeping it simple. First runs. Open phase down to third for a boundary. Well, there you go, Carey. Right on cue. They are going to go. Oh, Deccan! Did you imagine the catch would be there? Man just in front of square. Acres of space on the onside. And Yashasvi Jaiswal hits it straight. Swing drags it out to square leg. Very interesting reaction from mid-start.
We saw the numbers, didn't we? We saw the numbers in. Seeing off this new ball. Does he deep down say thank you? That's what I actually wanted. Or does he? I guess for you, Michael, when you were not opening, you're very. Oh, good ball. Oh, good ball. That's not good for KL Rahul. He's thrown his bat straight away. You wake him up in the middle of the night. You wake him up at 2 a.m. and say, I need you to bowl. He'll probably. Taller, more experienced. This stage in his. This is good bowling, and it's a really good feel because he's got all those grabbers behind. 5. I sometimes ponder how Glenn. Wow! Want to see a catch, you want to see that one. Australia are on fire and the fielders are helping the bowlers. Mitch Marsh has been in 2, forget the first one. Almost. Oh. You come into bats. Excellent bowling. He still played an open face shot at the ball. Got to read the form guide. Yeah, आज इसका तीसरा दिन और भारतीय टीम इस समय मुश्किल में 7 रन पर 2 विकेट भारत ने गंवा दिए हैं। इस जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक अच्छी साझेदारी कर रहे हैं। कड़ी परीक्षा भारतीय बल्लेबाजों की एक बार फिर से बीट हुए बल्लेबाज कोहली। आज शुरुआत में कोहली और विराट कोहली ने बढ़िया पारी खेली थी। इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को छोड़ा है, साझेदारी बने और उस पहले लक्ष्य को पार करें। थोड़ा सा स्कोर मिलेगा। सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। बहुत बढ़िया गेंद इस मौके पर भी केएल राहुल के लिए उछाल। इस अभी तक जितनी भी गेंदबाजी आप देखें धर्मेंद्र, तो सारी गेंदें हैं। 2 शतक ऑस्ट्रेलिया की पारी में आए, 1 शतक हेड के बल। उससे बीच में गई गेंद। हैजलवुड, जिन्होंने अभी तक अपने पिछले 2 ओवर में कोई रन नहीं दिया था, इस ओवर की पहली ही इस बार थोड़ी सी दिशा बदली लेग स्टंप पर, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर इस समय अधिकतर गेंदें। ये देखिए, ये है विश्वास भरा शॉट। ओवर पिच गेंद बिल्कुल बल्ले के साथ अच्छा संपर्क कराया और पहली बाउंड्री आती हुई केएल राहुल के बल्ले। चला जाए इस बार फिर से ड्राइव, खूबसूरत ड्राइव। इस बार बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर कह सकते हैं और जो थर्ड मैन उसके बीच से निकलता हुआ स्ट्रोक, हालांकि गली में जो फील्ड होता है। ये दिक्कत हो गई। पिछला गेंद शॉट था, पुल कराया और इस बार विराट कोहली की वापसी हो गई। आज अच्छी लय में है। इस समय बारिश फिर से शुरू हो गई है, हल्की सी बारिश तेज हवा के साथ, और इस तरह की बारिश इस बात का संकेत है जैसी हवा चल रही कि ज्यादा देर तक ये बारिश। They did it in Adelaide that night. Do you remember that? And Khawaja might not have seemed to achieve much, but he's eating into that hard new ball that darts around on this surface here. A bit of grass on the pitch, lovely pace now, and it's difficult. And a lovely start from this gifted man, Rahul. I think they've seen something. But he learned over the years to hone in, just get that half a yard full, or whatever it is. You can. Let's go. Rains will tend to give way to the day. A little lighter in the morning and then a little more torrential through the afternoon. So at the moment, covers are even just the Hessians. Well, we've got a break in play, and we may as well use it to show you some of the sparkle of Oh, and a bit of sea movement first up. That one
jacked back sharply. No. Interesting field placement straight up. Yeah, no. Yeah. Think about it. Yeah. Handle that well. Rising delivery. No short leg. Gets forwards. Hard for players on days like this where you're having to get yourself back in with rhythm and concentration, switch off. You never know when you're going to get back on again, having to warm up and cool down as a bowler. And Ravi's hit on a good point. If it's Rishabh Pant, 9 not out. Yeah, KL Rahul for me, if you look at the way that the Indian players have played in this series, he seems to have brought the best. Straight away into the runs. That will help India. KL Rahul, a boundary. Yeah, and one thing that it might do as well, there's bound to be some moisture in the out. There's a noise, is that it? It is the outside edge. Pat Cummins gets his first today. Well, Mitchell Stark stopped the 2. That's the ऑफ स्टंप और उसके आसपास भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली है और एक बार फिर से बारिश से बाधित ये मैच लगातार आज देख रहे हैं कि सुबह से रुक कर बारिश हो रही है और ये कम से कम चौथा मौका है जब बारिश की वजह से खेल बाधित हुआ है।